So now you have about 3 to 4 months to prepare for the quant section. And don't get me wrong, I know the CAT exam is 5 to 6 months away and you might be arguing that. However, for quant, you just have 3 to 4 months. You have to complete the syllabus by end of September or maximum by mid of October, you have to complete it. And you might feel it's very difficult to do. However, that's the beauty of CAT exam. You don't need to give equal attention to each and everything. And that's what we will discuss in this video. How to go about your preparation, what to prepare and what to give more attention to. And before I even start, let me show you the marks versus percentile for quant section last year. And it's very important to see this to understand the core fundamentals of your preparation strategy. So let me show you this. 90 percentile, you needed 15 marks. 95 percentile, you needed 18 marks. And 3 marks difference, it's just one question. Means 90 to 95, you could have jumped by just one more extra question. After the 98 percentile, around 24 marks you needed. 99 percentile, you needed 27 marks. That's approximately 9 to 10 questions you would need. 9 to 10 correct questions. And 99.9 percentile you could get by getting around 39 marks. 85 percentile, if I see over here, it's around 13 marks as well. So if you see 85 percentile to 90 percentile difference, that is also less than one question. So out of the 22 questions, if you could have got 6 to 7 questions correct, you would have got 95 percentile, and more than 5 to 6 questions correct, and you would have got a 90 percentile. And the next year the paper might be easy, so you might require say 8 to 9 questions to get a 95 percentile. But the thing is, less than 50% of the questions as well, if you do, you will get great percentile, even if quant is a weak section. And I'm not saying that getting 6-7 questions out of 22 will be very easy for you. You definitely have to put a lot of effort. However, that's the beauty of CAT exam, that you can crack it with smart effort as well. So now let's start with the syllabus and you'll be able to understand my point even better. So we have 5 broad areas for quant. First is arithmetic, under which you have to prepare these particular topics. After that, we have algebra, under which you have to prepare these topics. After that, number system, which have to be covered with these topics. After that, geometry, and finally we have modern maths. But now let's see the question split that comes in the actual examination. From arithmetic, out of the 22 questions, around 8 to 9 questions come from arithmetic itself. After that, algebra, around 5 to 6 questions come from algebra 2, and rest of the topics, that is geometry and number system, 2-3 questions can come from geometry and 2-3 questions from number system. And for modern maths, maybe 1 or 2 questions from modern maths. Okay, so that is the kind of split. Here you can see, if you do arithmetic properly, you can attempt a lot of paper. You are already above 95 percentile. Algebra, if you do properly, you have almost covered, with arithmetic and algebra, you have covered 70% of the quant paper. Yes, it's not that 8 to 9 questions you have from arithmetic and you just prepare arithmetic and you will get all 8 to 9 questions correct. It doesn't happen that way. There will be few questions from arithmetic that will be very difficult to attempt. So that's why you cannot expect to do all the 8-9 questions from arithmetic. But even targeting 50% of that is a real good strategy, and then followed by algebra. That's why whenever someone says that I don't have enough time to prepare for the quant section, I always tell them arithmetic and algebra, you cannot compromise your time on arithmetic and algebra. Whatever someone preparing for 7 months, 8 months is giving, you have to give the same kind of time for arithmetic and algebra. However, for rest of the topics, that is where you will start shrinking your preparation time. That is where you will start compromising a little. Can this pattern change in the next year? Of course it can. There's no hard and fast rule provided by CAT that it will be the same this way. However, this has been continuing for so many years, and the same pattern repeats across different competitive examinations as well. So that's why you have to go with the assumption that it will be the same if you want to follow a smart strategy. And when I say a smart strategy, I don't mean that you just prepare for those topics and ignore the rest of them. Arithmetic, algebra, you focus really well, do a lot of sectionals, practice medium to difficult level of questions as well, and make sure that you are prepared for most of the questions under these topics. For the rest of the topics as well, you have to do the theory preparation. Maybe not a lot of sectionals you will attempt from the other topics, but yes, you have to make sure that you know all the formula. You have to make sure that you have done some example problems, so that if a very easy problem, just a formula based question comes from geometry or number system or modern maths, you should be able to attempt that. And now coming to the preparation part of it, the actual preparation strategy, and let me tell, for both kinds of people, ones who have taken coaching and ones who are going to do a self preparation. And while we are on this topic of coaching institution, let me also tell you about the partners of this video. You can start preparing with the coaching from now on, and that does not need to be very expensive too. For example, Physics Wala, who are the partners of this video, it is a very affordable option, and last year they had some great results. So last year Physics Wala had
many 99 percentilers, they had many 95 percentilers as well, and more than 317 students from Physics Wala had converted IIM last year. It means this year they will be joining IIM. So definitely it's an affordable option, but also gives you an option to be among those 300 toppers. And recently only the Physics Wala toppers, they celebrated with their faculty. And if you want to join Physics Wala now, there are 2 batches that you can enroll in. So the first batch is MBA Ignite 2026, where you get live classes for CAT and OMETS 2026 preparation, daily practice problems with video solutions, weekly tests, mock tests, 24/7 doubt support, and more than 72 students this year had secured selections from the MBA Ignite batch itself. Or you can also join their MBA Pro 2026 batch, which is a more comprehensive batch. And in this batch, in addition to everything mentioned in Ignite, you also get MBA Books module, MBA One Pass Test Series 2026, MBA Khazana, which is basically the previous year's concept building videos, and GDPI VAT SOP sessions as well for your final admission preparation. So if you want to join these batches, the link will be there in the description, and you can also use my coupon code ANA500 for extra discount on any of these batches. And now coming to the preparation aspect, सबसे पहले तो मैं एक schedule बना के देता हूँ आपको. ये एक schedule आप follow कर सकते हो. If you want to follow this, it's great. If you don't want to follow this as well, you can tweak it according to your own insights. However, the problem is that आपका हर एक topic का एक deadline होना चाहिए. A lot of people think that okay, I will complete the syllabus by this particular date. Suppose मैं September end तक syllabus complete करूँगा, but that will never happen. You will keep procrastinating. आपको हर एक topic का deadline बनाना पड़ेगा, so that as soon as you cross that particular date of a particular topic, आप panic करना start कर दो. It cannot happen कि 2 month बाद आपका एक deadline आता है. That cannot happen. It has to be every 3-4 days. There has to be a deadline, and you have to adhere to it. अगर आप कोचिंग ले रहे हो, then I would say your preparation strategy would look like आप अपना schedule बना लो, either according to your own insights, or you can follow the coaching material as well. जैसे जैसे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, you can follow the same timetable. आपको क्या करना है, आपको वीडियो जाके देखना है. कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है, पहले वीडियो कवर करो, उसके बाद डू द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, एनी कोचिंग मटेरियल दैट इज देयर. उसके बाद स्टार्ट डूइंग द PYQs, एंड कुछ फ्री रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल MBA सर्कल में भी हम लोग फ्री RCs, फ्री क्वांट क्वेश्चंस, फ्री LRDI प्रोवाइड करते हैं. एवरी फ्री मटेरियल दैट यू हैव आउटसाइड, यू डोंट नीड टू परचेज एनी मटेरियल आफ्टर दैट. मैक्सिमम PYQs खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ खरीदना नहीं है अगर आपने कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो. ट्राई टू फॉलो द कोचिंग मटेरियल एज मच एज पॉसिबल. उसके बाद कुछ फ्री रिसोर्सेज आपको बाहर मिल जाते हैं. यू कैन गो एंड प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. सो कोचिंग वालों के लिए पाथवे क्या है? वीडियोस देखा, उसके बाद एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स किए, उसके बाद फ्री रिसोर्सेज से प्रॉब्लम्स कर लिए या फिर PYQ सॉल्व कर लिया. उसके बाद वंस यू कवर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स, से अंडर अरिथमेटिक यू हैव कवर्ड 6-7 टॉपिक्स, उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल्स देना शुरू कर दो. देन दीज आर द टेस्ट दैट विल रियली हेल्प यू. एंड उसके बाद आप ग्रेजुअली मॉक टेस्ट देना ऑब्वियसली शुरू करोगे, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद इट. एंड दिस इज फॉर एवरीवन. आपको एटलीस्ट 1.5 to 2 hours देना है एवरी डे. अगर आप वर्किंग हो 1.5-2 hours फिर भी आपको क्वांट के लिए ओनली देना है एवरी डे वीकडेज में. एंड यू हैव टू मेक अप ड्यूरिंग द वीकेंड्स, दैट इज 3 hours 4 hours आपको देना है ओनली फॉर द क्वांट सेक्शन. अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है, देन आई वुड सजेस्ट 2.5-3 hours दो वीकडेज में, एंड वीकेंड्स में भी अराउंड 3 to 4 hours आप दे सकते हो फॉर क्वांट सेक्शन अगर आपके पास टाइम है थोड़ा ज्यादा. बट व्हाट अबाउट दोज हु आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन? वो कैसे फॉलो करेंगे ये शेड्यूल को? सो सबसे पहले तो आप एक अपना ग्रुप बना लो, सो दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय योर पीयर्स. आप यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. आई कीप टेकिंग वेबिनार्स. आई विल start taking webinars every particular month. At least once or twice every month I will take a webinar, so that people know that they are on track, or whether what other people are doing. And maybe we'll start a discussion group as well, where the toppers or serious aspirants can at least discuss amongst themselves, especially if they are doing self preparation. तो आप वो WhatsApp group भी join कर सकते हो, so that you know what other aspirants are doing. self preparation में ये एक बहुत बड़ा problem होता है कि you are just preparing on your own, you don't know what others are doing, and you feel like procrastinating and not motivated enough. तो उसको अवॉइड करना है सबसे पहले तो. एंड प्रिपरेशन कैसे करोगे? मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए थे पहले कि क्या क्या सिलेबस में टॉपिक्स होते हैं. ईच एंड एवरी टॉपिक को जाके आप यूट्यूब पे लिख सकते हो, एंड जस्ट टाइप कैट प्रिपरेशन. आफ्टर दैट जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो भी अच्छा ऊपर टीचर रहेगा, जो भी अच्छा वीडियो रहेगा, वो टॉप में आ जाएगा. जस्ट गो एंड वॉच द थ्योरी फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टीचर आपको देखते देखते पसंद आ जाए, देन यू कैन फॉलो ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीचर. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉपिक वाइज जाओ. यू डोंट नीड टू फॉलो
follow a specific teacher. You just go search for a video, whoever comes on top, just see that particular video. जो भी top में है, मतलब a lot of students have seen that, a lot of students have liked that video, so it's a credible video. Okay, so आप जाओ YouTube पे वो topic search करो, CAT preparation type करो, get that topic, study that topic, do the entire theory. उसके बाद free resources से आप और ज़्यादा questions practice करो. If you don't have any other coaching material as well along with you, आप कोई एक book खरीद सकते हो. I would suggest there are a couple of books like निशित के सिन्हा एक book है, सर्वेश वर्मा करके एक book है, तो इन दो books में से आप कुछ quant के लिए खरीद सकते हो and you can start doing problems. But make sure कि आप सारे problems book के solve करने मत चले जाना. It will take a lot of time. Rather, you have to purchase a mock at least. Even if you are doing self preparation, आपको एक mock test series तो लेना पड़ेगा. And उस mock test series से जाके आपको topic test and sectionals का भी access मिल जाएगा. So start practicing topic test and sectionals from there. And आप देखना जब भी YouTube videos में कोई पढ़ाता है ना, they also solve example problems. Try to solve that example problem before the teacher and then see the solution. Because coaching में तो आपको एक coaching sheet दिया जाता है, वो solve करते हो. However, जब आप self preparation कर रहे हो, that becomes, those questions become your example problem. पहले खुद का दिमाग लगाओ, उसके बाद see the solution. That is going to really help you. तो self preparation वालों के लिए road map क्या है? सबसे पहले अपना एक schedule बनाओ, like the one that I have made. मैं उसको description में add भी कर दूंगा, वहां से देख सकते हो. But make sure कि आप अपने तरीके से tweak कर लो. उसके बाद जो जो topics है वो जाके आप, and also make sure कि आपके पास एक well knit group हो जो आपको motivate करे to keep preparing. And उसके बाद जो जो topics mentioned है उसको जाके YouTube पे देखो, YouTube से solve करो. उसके बाद PYQs या free resources या फिर जो दो books मैंने mention किए उनमें से कहीं से भी आप practice problem solve करना शुरू कर दो. 30-40 questions at least of different varieties you have to do from every topic. याद रखना, different varieties is the important concept. Just 30-40 problems करना is not sufficient. 30-40 problems that are of different varieties, different concepts covered है. Just calculation numbers change कर दिया and same concept का problem आपने 30-40 questions solve कर लिया, that is not going to help you. तो जब आप ये कर लेते हो उसके बाद then you can go for the topic test, the sectionals and the mock tests. And suppose you have 3.5 months to prepare for quant from now on. I would say you have to dedicate 1.5 month to your arithmetic section, 1 month to algebra section, and the rest 1 month to geometry, number system, as well as your modern maths. This is how your schedule should look like for the next 3.5 months. And इस 3.5 months में आप जैसे arithmetic cover कर लेते हो, make sure you keep revising, you keep solving problems from arithmetic as and when you're preparing algebra and the other topics. आप arithmetic के problems continuously solve करते रहो so that you don't forget those things. Arithmetic, algebra इस तरीके से और strong होता रहेगा आपका. Geometry, modern maths ये सब में भी आपका base बन जाएगा. You might not be that strong but at least base बन जाएगा. And arithmetic and algebra you will be very strong and that will set you up for at least a 95 plus percentile. 99 percentile चाहिए, then yes you have to put a little bit of more effort on geometry and number system as well, but that is possible, that's not impossible I would say. But आप 1 month में बहुत ज़्यादा focus डालते हो उन particular topics में, you can achieve, you can cover that in depth as well. I'm not saying कि सब लोग on the surface ही cover करेंगे, but depends on from where you are starting as well. I would suggest you one more thing, that is before even starting your preparation, आप एक mock test दे दो. एक quant का previous year question solve कर लो. Maybe 2024 would be a good paper to give. CAT 2024 थोड़ा easy quant paper भी था. And just see where you stand at. Most of the topics actually class 10 की topics होते हैं, class 10 के maths topic होते हैं. Try to see कि क्या आप उन questions को solve कर पा रहे हो without timer. Don't just give 40 minutes to yourself. Give 2 hours, 3 hours for one particular CAT 2024 quant section paper and try to see आप कितने questions उस टाइम पे solve कर पा रहे हो. If you are able to solve a lot of questions, if you think that हाँ आपका basic concept अच्छा है, बहुत easily आप 99 percentile के लिए जा सकते हो, target कर सकते हो. But if you think कि आप सब कुछ भूल चुके हो, basic percentages भी आपको help चाहिए, then I would say आप थोड़ा अपना ऑब्जेक्टिव एंड अपना जो एम्बिशन है उसको थोड़ा कम करो एट दिस स्टेज, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट बट टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट फर्स्ट 95 परसेंटाइल वाला बेंचमार्क क्रॉस करो. उसके बाद यू गो एंड टारगेट दैट 99 परसेंटाइल. वंस यू सी दैट यू हैव बिकम अकस्टम्ड विद द मॉक्स एंड सब में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हो, उसके बाद वो एम्बिशन रखो. बट 95 परसेंटाइल प्लस ये आपका टारगेट होना ही चाहिए. एवरीवन कैन डू इट. अगर आपने वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखा होगा, आई वांट टू शो दैट टू यू अगेन एंड वांट टू show that because that will help you understand कि मैं क्यों वो बार बार दिखा रहा था. So अगर आप ये देखोगे तो 85 से 95 परसेंटाइल के बीच में जो कंसंट्रेशन है उसको देखो. एक एक क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट 5 परसेंटाइल का डिफरेंस आ जा रहा है. एक क्वेश्चन अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया, बिकॉज
कैट पेपर ऐसे डिजाइन होता है, एटलीस्ट देर आर 5, 6, 7 क्वेश्चंस विच आर काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 10 क्वेश्चंस विच आर काइंड ऑफ मीडियम क्वेश्चंस एंड मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड उसके बाद कुछ लास्ट 5, 6 क्वेश्चंस होते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट. ये जो पहले के 6, 7 क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर आपको चाहिए स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी कि आप सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड हो कि आप वो अटेम्प्ट कर लो, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी मोस्ट ऑफ द पीपल लाई इन दैट रेंज 85 to 95 में, इतने छोटे छोटे, बिकॉज 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन वैसा ही मार्क है जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू सॉल्व. उसके ऊपर जाने के लिए यू हैव टू बी अ लिटिल बिट वेल प्रिपेयर्ड. सो इसलिए वो 95 to 99 का गैप जो हो जाता है, दैट इंक्रीजेस, दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंड 99 to 99.9 का गैप अगर आप देखोगे, इट फर्दर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बिकॉज उसके बाद तो बहुत वेल प्रिपेयर्ड कोई स्टूडेंट है वही जा पाता है. दैट इज, आप बस इजी क्वेश्चन करके आओगे, यू वोंट बी एबल टू गेट अ 99.9 परसेंटाइल. यू हैव टू सॉल्व द मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल. बट अगर आपका एम्बिशन है 95 के ऊपर मुझे किसी तरह जाना, यू आर नॉट वेरी गुड एट क्वांट्स, देन आई वुड सजेस्ट यू इजी टू मीडियम क्वेश्चंस टारगेट करो. 6 to 7 क्वेश्चंस पहले टारगेट करो, उसके बाद ट्राई टू इंक्रीज इट ग्रेजुअली टू 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, एंड देन इफ इट्स एन easy paper you can probably increase it to even 13, 14 questions. And finally, the attempt strategy for you in the quant section should always be a round wise strategy. That is, round 1 should be for all those questions which you can solve in less than 100 seconds. You are familiar with that particular topic, you are familiar with that particular question, and you are absolutely sure you can solve it. पहले वो solve करो. If there's any topic which you think that okay I'm not comfortable with this, या फिर I have not solved this kind of a problem before, just leave that for round 1 at least. जो टॉपिक्स है जिससे आप फेमिलियर हो बट यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसको राउंड 2 में आओ. बट इट विल टेक यू टाइम, इट माइट टेक यू टाइम, इट विल टेक यू टाइम टू स्ट्रक्चर द प्रॉब्लम. उसके लिए राउंड 2 में आओ, सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, एंड अगर यू गेट टाइम फॉर राउंड 3, दोज विल बी द क्वेश्चन दैट यू आर एब्सोल्युटली अनफेमिलियर विद एंड यू आर सॉल्विंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, या फिर ऐसा क्वेश्चन विच विल बी वेरी लेंदी इन कैलकुलेशन, वो सब आप राउंड 3 में आओ. बट यूजली पीपल डोंट गेट टाइम फॉर राउंड 3. ट्राई टू सॉल्व द ईजीएस्ट ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस इन राउंड 1. आई एम प्रिटी श्योर आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस राउंड 1 में कर लोगे. उसके बाद राउंड 2 में आओ. पीपल हु आर वेल प्रिपेयर्ड वो अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस राउंड 2 में भी कर लेते हैं, एंड देन पीपल हु आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड वो राउंड 3 में जाते हैं एंड अनदर 4-5 क्वेश्चंस वहां भी करके आ जाते हैं. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो. आई विल बी सून कवरिंग फॉर DILR एंड वर्बल एज वेल द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू फॉलो. सो मेक श्योर अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो, यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.